Balvanshi and I'm an assistant professor in the SAGE group. I welcome you on the video lecture on the topic Thesis and its part. This is the part 1 of the video lecture. Thesis लिखना होता है एमटेक स्कॉलर को, पीएचडी स्कॉलर को, और एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है थीसिस लिखने का। तो आइए जानते हैं कि थीसिस क्या होता है और इसके पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे लिखना चाहिए। तो सिंपल ये कहा जा सकता है कि अ डिसर्टेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन विच वन हैज डन ओरिजिनल रिसर्च एज वन प्रेजेंटेड बाय कैंडिडेट फॉर डिप्लोमा और डिग्री, ये होती है थीसिस। थीसिस हमेशा हमारे रिसर्च टॉपिक, हमारे काम की एक छोटी सी बुक जिसे हम कह सकते हैं, यह एक हमारी थीसिस होती है। तो थीसिस लिखने के लिए थीसिस को डिवाइड किया जाता है वेरियस पार्ट्स में, और यह पार्ट मैंने डिवाइड किए हैं लाइक द इनिशियल पेजेस। इनिशियल पेजेस में आते हैं टाइटल पेज, द अप्रूवल शीट। अप्रूवल शीट कुछ यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स, इंस्टीट्यूट के जो होते हैं, यह प्रोवाइड करने को कहते हैं कि अप्रूवल शीट भी दी जाए। एंड देन वी हैव एन एब्स्ट्रैक्ट, देन एक्नॉलेजमेंट, देन डिक्लेरेशन, table of content, list of figure, list of tables and abbreviations. Remember one thing, हर एक यहाँ पे जो हेडिंग लिखी है, टाइटल पेज, अप्रूवल शीट, एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज completely printed on each सेपरेट पेज। टाइटल पेज एक सेपरेट पेज पे होगा, अप्रूवल शीट डिफरेंट पेज पे होगी, एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंट पेज पे, एक्नॉलेजमेंट डिफरेंट पेज पे, एंड सो ऑन। Let's try to get what we write under this in detail further. So first one is the title page. Title page में the title which is of your thesis, ये लिखा जाता है, your name और surname, name and surname. अब ये बैचलर डिग्री है या मास्टर थीसिस है, पीएचडी थीसिस है, ये मेंशन किया जाता है। फैकल्टी का नेम या डिपार्टमेंट, ये किसके अंडर में परफॉर्म किया गया है ये थीसिस, हु हैज बीन योर गाइड और सुपरवाइजर, यह लिखा जाता है। डिपार्टमेंट जहां पर ये जमा की गई, एंड योर कॉलेज नेम और इंस्टीट्यूट नेम, एंड प्लेस एंड डेट ऑफ कंप्लीशन। Next is the approval sheet. This is to prove that the authors have passed the requirements needed for thesis. This is signed by the thesis or the advisor or the panel and the dean. This also states the grade obtained by the authors. यहाँ एक छोटी सी एक फॉर्मेलिटी होती है, कुछ कॉलेजेस और कुछ यूनिवर्सिटीज में की जाती है। यहाँ पे हमें एक जैसे नो ड्यूज कंप्लीट किया है या फिर कंप्लीटेड ऑल द थ्योरी एंड थ्योरी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स, यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। इसके बाद ही आपका थीसिस प्रिंट के लिए अप्रूव होता है। Abstract. An abstract presents a brief summary of your thesis. The aim of the abstract is to briefly provide the reader with the most important information. यहाँ पे हमें most important information देनी होती है, like हमारा title से related हमारा topic and the study area and the result, the conclusion. ये basically एक 2 to 3 पेज का short summary of your thesis हम इसको कह सकते हैं, ये हमें लिखना होता है। This is the gist of our thesis. Acknowledgement, this page हमने जिससे मदद ली, हम किसको डेडिकेट कर रहे हैं, किस एजेंसी से हमने मदद की, किस तरीके से क्या क्या हमारे सीनियर्स, हमारे सुपरवाइजर्स, हमारे डीन्स, हमारे डायरेक्टर्स, जिन्होंने भी हमें हेल्प करी, इन सबको यहाँ पे मेंशन करना होता है। नेक्स्ट इज द टेबल ऑफ कंटेंट। इन द टेबल ऑफ कंटेंट हमें एक आउटलाइन देनी होती है, लाइक हमको हेडिंग्स रहती हैं हमारी, जैसे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, देन chapter 1 is introduction, so 1.1 we can say general, 1.2 we can say introduction to so and so topic, 1.3 we can give area of study, like this. And this all information goes into the table of contents. Next is the list of tables or list of figures. Now in this we have to give all the figures and all the tables which we have included in our thesis, we have to mention it over here. Like एक बुक होती है, जैसे
हम देखते हैं टॉपिक और उसका पेज, तो वैसे ही लिस्ट ऑफ टेबल और लिस्ट ऑफ फिगर। तो एक पेज होता है लिस्ट ऑफ टेबल का, जहां पर हम एक टेबल है, उस टेबल का टेबल नंबर 1, टेबल का नाम और उसका पेज नंबर ये मेंशन करेंगे। ऐसे ही एक फिगर लिस्ट ऑफ फिगर का पेज है, उसमें टेबल नंबर, टेबल का नाम और उसका पेज नंबर ये मेंशन करेंगे। तो यह मेंशन किया जाता है लिस्ट ऑफ टेबल्स के पेज में एंड लिस्ट ऑफ फिगर्स के पेज में। देन द टाइटल ऑफ चैप्टर्स। टाइटल ऑफ चैप्टर्स में हमको प्रॉब्लम एंड इट्स बैकग्राउंड, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथडोलॉजी, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, यह सब हमको इसमें देना होता है। जैसे कि हमने बताया कि चैप्टर 1 जो कि होगा इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, तो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा कि इंट्रोडक्शन कि आपका टॉपिक का इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा, उसमें किस टॉपिक पे काम किया गया है थोड़ा सा उसके बारे में आएगा, फिर थोड़ी डेफिनेशंस आएंगी। ऑल दीज आर सपोर्टेड बाय द रेफरेंसेस। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टडी। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टडी, the main focus of your study, who will benefit from the study, ऐसे क्वेश्चंस इसमें हमको आंसर करने होते हैं। दिस सेक्शन will state the contribution of your study and the usefulness of your study in the society. Here you have to justify that how your research work is contributing towards the society, who is the beneficiary of your study. Next is statement of the problem. The problem must be reflected to the title, or the readers must know your problem by just simply reading your topic. आपका the problem must not be answerable by yes or no and must be arranged in the flow of your documentation or study. Next comes the conceptual framework. A conceptual framework elaborates the research problem in relation to relevant literature. This section may summarize the major variables in your research, existing research and its relevance for your topic. यह होना चाहिए। Key ideas होना चाहिए। Discuss various variables related to your problem. यह हमको करना है। Conceptualizing the relationship between variables, independent variables, dependent variables, intervening variables. तो यहाँ हमें अपना एक फ्रेमवर्क डिजाइन करना होता है। देन स्कोप एंड डिलिमिटेशन। द स्कोप इज मेनली द कवरेज ऑफ योर स्टडी एंड द डिलिमिटेशन इज द लिमिटेशन ऑफ योर स्टडी और टॉपिक। बहुत ही सिंपल है। यहाँ हमें ये कवर करना है कि हमारा किस किस एरिया को कवर किया है, हमने किस किस पॉइंट्स को कवर किया है। एंड डिलिमिटेशन में हमने ये बताया है कि हमारा लिमिटेशंस क्या है स्टडी के, which we can tell like after conclusions we usually give future research and limitations of our study, वहां पे हम दे सकते हैं। Definition of terms. The definition of terms must be arranged in alphabetical order. It must be also stated that if you used your definition of terms technically or operationally. The second chapter is the review of related literature and studies. In this, the related literature comes in a chronological order. जो भी material, magazines, newspapers, books, journals, internet sources, कोई भी source से आपने collect किया है, that is to be cited relevant to your study topic, but in a chronological order. Must be organized to cover specific problem, must take all evidences about the problem with the author's experience. As much as possible, get the latest published material. Avoid old published material. It must be related to your topic, if not, do not get it. On the last part of this, you must have a statement how this old published material helps the researcher in the current study. इसका मतलब यह है कि जब लिटरेचर सर्वे हम कंडक्ट करते हैं, किस आइडिया से कंडक्ट कर रहे हैं कि हम इस टॉपिक का एक गैप फाइंड कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ गैप आफ्टर द कंडक्शन ऑफ दिस होल लिटरेचर सर्वे। वी गेट a research gap, and this research gap is taken as an objective for our study. So the related studies,
In this part, you must get your data information from unpublished material such as previous or old study research or thesis. In some format, you must label your unpublished material local or foreign. This should be organized to cover the specific problems. You must take note of all the evidences previous researchers came up. The unpublished material should not be older than 5 years if possible. It must be related to your topic. And again, in this also, you should come up with a research gap. Research gap find करना बहुत important है as to find out your objective या focus on your objective. So now, after a literature review, the third part comes the methodology. After that, the chapter comes of result and discussion, then conclusion, then references, and which will be discussed ahead in the next video, thesis and its part number 2. Thank you, stay tuned and keep learning.